After the Pascal law, now we will see here pressure variation in fluid. You can say hydrostatic law. Okay, basically here we will calculate the variation of the pressure along with the depth of the fluid. Okay, actually in the fluid, let's suppose we have a fluid. This is the fluid surface level. Okay, and if we are going with the depth, let's suppose this one point, this point, the pressure will be vary. Okay, the pressure will be here different, and at this point will be different. So basically we will find the variation of the pressure in this topic, in this video. Okay, so first of all, let's suppose we have a fluid in a container. Okay, have the mass density rho, and here there will be three direction. First one is x direction, second is y direction, and third is z direction. Okay, so z direction will be vertically downward in the diagram, and I consider a fluid element, a small element in a fluid, and the pressure Pz will be act on the fluid at area dA. Okay, from the surface of the fluid. The surface of the fluid at here you can see this is the surface area of the fluid. Below the height h, yeah, h depth, below the depth h, we will take a element, fluid element. Okay, we which have the height dz and area dA. At the area of dA, the pressure Pz is act. Okay, and from the downward side, a opposite force Pz plus ka dz will be act on the element, so that if I draw a free body diagram of this element, I draw a diagram here. So you can see this is the A, B fluid element, and force, this is the pressure. Pz is the pressure. Okay, Pz is the pressure. If I convert the pressure in force, so we know that P is equal to F upon A. Okay, F upon A. So F is equal to P into A. Okay, so we will see here Pz into dA. dA is the area of the surface, this surface. And we can see the element have a weight. Okay, so weight will be weight is equal to, we can see unit weight is equal to weight upon my volume. Okay, so weight is equal to volume into my unit weight. So what we can see, we can write rho is equal to rho g, gamma is equal to rho g, sorry, gamma is equal to rho g. So we can write rho g, this is the gamma, and dv is the volume, dv is the volume of the element. So we can write rho g dA into dz. So dz is the height of the element. So this is the weight of the element which is act in downward direction. Okay, from the if I we want to calculate, actually we want to calculate force from the downward side. Okay, so we can see here the Taylor series fx plus dx is equal to, we know, actually you can see in the mathematics, Taylor series fx plus dx is equal to fx plus d upon by dx fx dx. Okay, so it will be extend up to infinitive. So we can write pz plus dx, pz plus curly upon my curly z, pz into my dz. Okay, so we can write here, because this term is very small. Okay, so we can take only this term pz plus ka curly z upon curly z into my pz dz. So we can write here this type of statement. After that, we can also saying कि dz is equal to dpz. इट मीन्स कि अगर मैं dz, मेरे पास क्या है, dz में क्या जाऊँ, dz में डेप्थ पे जाऊँ, तो मेरे पास में प्रेशर में कितना चेंज आ रहा है, dpz. ओके,
अगर मैं यूनिट चेंज देखूं, यूनिट एक यूनिट में कितना हो रहा है, तो 1 यूनिट में, तो डी पी अपन में डी जेड, इसको इधर लेके आ जाएंगे। ओके, तो डी पी जेड अपन में डी जेड। अब एक में तो हो रहा है मेरे पास में चेंज कितना, डी पी जेड अपन में डी जेड। तो ये टोटल लेंथ कितनी है मेरे पास में, डी जेड। तो डी जेड में कितना हो जाएगा, डी पी जेड इंटू में डी जेड। ओके, इंटू मेरे पास क्या जाएगा, डी जेड। ओके, ये करली जेड है एक्चुअली में, यहाँ पे आप करली लिख सकते हो उसको, करली जेड अपॉन में करली पी जेड। तो यहाँ पे मेरे पास में करली पी जेड अपॉन में करली जेड इंटू में डी जेड। ओके, तो ये करली है, यहाँ बाई मिस्टेक लिखा गया, तो आप करली जेड लिख सकते हो। मैं दिखाई देता हूँ आपको, देखिए करली जेड इजिकल टू मेरे पास क्या जाएगा, करली पी जेड। ओके, इट मीन से दैट कि आपके पास में डी जेड डेप्थ पे अगर मैं जाऊं तो प्रेशर में कितना चेंज आ रहा है, डी पी जेड। ओके, ये है मेरे पास में डी जेड में। अगर मैं यूनिट देखूं, यूनिट चेंज कितना आ रहा है, तो करली पी जेड अपॉन करली जेड इजिकल टू 1। ओके, तो वी कैन राइट हियर 1 यूनिट में मेरे पास में इतना आ रहा है, और मेरे को देखना है डी जेड में, तो डी जेड से क्या करूँगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो डी जेड। ओके, यू कैन राइट ऑल्सो। तो फिर यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास में पी जेड प्लस का पी डी जेड इजिकल टू पी जेड प्लस का करली पी जेड अपॉन में करली जेड इंटू में डी जेड। तो वी कैन टेक केयर द समेंशन ऑफ vertically load will be equal to 0 for the equilibrium condition. We can take the all summation या algebraic sum of the vertical force will be 0. So we can see at the top the force will be act pz into a, so pz into a, this one. The weight also act downward, so we can take also weight rho rho g dA dz. Okay, minus means this force is up in opposite direction. Okay, तो take minus पी जेड प्लस करली पी जेड अपॉन में करली जेड इंटू में डी जेड इंटू में डी ए इजक्वल टू 0। तो करली पी जेड डी ए कैंसिल हो जाएंगे दोनों। ओके, अगर मैं इसको माइनस को अंदर लेके जाऊंगा तो गेट कैंसिल, पी जेड डी ए कैंसिल हो जाएंगे। आफ्टर दैट डी ए एंड डी जेड विच आर कॉमन will be equal to 0. After that only rho g is equal to curly pz upon में curly z. तो we can write here curly pz upon में curly z is equal to rho g, and rho g will be equal to gamma, because we know that gamma is equal to rho g. Okay, gamma is equal to rho g. So we can say the rate of change of pressure along the depth is equal to weight density of the fluid. Okay, so you can see the rate of change of pressure along with the depth will be equal to weight density of the fluid. So this is the hydrostatics law. You can say pressure variation in the fluid. You can see if the direction of the if the z direction will be taken in upward side, the gamma will be in minus. Okay, gamma will be in minus because of direction. If I take the direction of the z in downward direction, so it will be positive. So don't, this is the positive and minus, positive and negative problem. So don't worry, you can take as you wish. So thank you so much.